Hello students, this is Prabhas Sharma, Assistant Professor, Department Electronics and Communication, Oriental Institute of Science and Technology, Bhopal. Today my lecture topic is Types of Sampling. This topic comes under the subject Digital Communication. Sampling. According to the sampling theorem, Fs must be greater than twice of the highest signal frequency Fmax of the signal. Types of sampling. There are three types of sampling: ideal sampling, natural sampling, and flat top sampling. Natural sampling and flat top sampling comes under the practical sampling. Ideal sampling, also known as impulse sampling or instantaneous sampling. So first sampling is ideal sampling or impulse sampling. It is done by the multiplication of the signal ft or xt by the uniform train of impulse, that is COM function. Impulse sampling. From the word, it is clear that we are using impulse function. We are using a multiplier xt multiplying with del tst or x del t. That is, xt is analog signal and x del t is train of impulse, periodic impulse function. We are getting sampled signal xst, which is equals to xt multiply with x del t. X del c is train of impulse. Train of impulse function, select sample values at regular interval. Train of impulse, that means periodic impulse function. A impulse function which is repeating itself after every ts, 0, ts, 2ts, 3ts, 4ts. Impulse function is repeating at a regular interval. So we can write xst equals to xt summation of n equals to minus infinite to infinite del of t minus n ts. ठीक है, n इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे तो इम्पल्स फंक्शन हमें एवरी ts के बाद मिलेगा. सो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन. द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन इज 1 by ts summation of n equals to minus infinite to infinite e to the power j n omega st. This is the formula of Fourier series representation. हमने पढ़ा है एनालॉग कम्युनिकेशन, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन. फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज यूज करते हैं और आप यहाँ यूज कर रहे हो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज where omega s equals to 2 pi by ts. Ideal sampling. This is the Fourier transform of sampled signal in the Fourier transform of original signal at a rate of 1 by ts. हमने यहाँ पर 1 by ts के अकॉर्डिंग इसको सैंपल किया है. Ideal sampling. Ideal sampling in fs is greater than twice of fm. No overlap of repeating replicas. fs minus fm is greater than fm or fs is greater than twice of omega m. So according to the sampling theorem, a finite energy function xt can be completely reconstructed from its sample value x of nts. ठीक है, अगर प्रॉपरली रिकवर आपको करना है तो x of nts में आपका जो सैम्पलिंग रेट है वो ts इज ग्रेटर देन 1 by 2 fm होना चाहिए. तो दैट इज द xt is summation of n equals to minus infinite to infinite ts x of nts sin x upon x, which is known as sinc function, which provide that 1 by fs is equal to ts, which is less than or equals to 1 by 2 fm. Ideal sampling, message signal is x of f and the carrier is train of impulse xs of f. जो आपका मैसेज सिग्नल है वो शिफ्ट हो रहा है आपका इम्पल्सिस पर. ठीक है, इट इज क्लियर फॉर द डायग्राम दैट fs इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ fm. ts is called as Nyquist interval. It is the longest time interval that can be used for sampling a band limited signal and still allow the reconstruction of the signal at the receiver without distortion. Now, फिर से एक बार डायग्राम से देख लेते हैं. व्हाट इज xt?
message signal, del t minus nts, that is train of impulse, we are multiplying with xt और del tst. आप मैसेज सिग्नल को ट्रेन ऑफ इम्पल्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको सैंपल सिग्नल मिल रहा है. मैसेज सिग्नल को आप ट्रेन ऑफ इम्पल्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको मिल रहा है सैंपल सिग्नल जो आपका डिस्क्रीट सिग्नल है. हमने पहले पढ़ा है सैम्पलिंग इज अ ब्रिज बिटवीन एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल. सैम्पलिंग एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर रहता है. ठीक है, तो यहाँ आप एनालॉग सिग्नल को x del t से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको मिल रहा है सैंपल सिग्नल. दिस इज द टाइम डोमेन. फ्रिक्वेंसी डोमेन, फ्रिक्वेंसी डोमेन में ट्रेन ऑफ इम्पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगेन ट्रेन ऑफ इम्पल्स होगा और जो मैसेज का आपका फ्रिक्वेंसी डोमेन होगा वो शिफ्ट हो जाएगा इम्पल्सेस पर, शिफ्ट होगा वो इम्पल्सेस पर. फॉर प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन fs must be greater than twice of fm. In this diagram the fs is exactly equals to twice of fm. exactly equals to क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो पल्सेस हैं वो जस्ट टच कर रही है. ठीक है, so this is the condition of Nyquist interval. Practical sampling, ideal sampling or impulse sampling, that is ideal method. Practical method is when the practical method is difficult to create train of impulses. ठीक है, it is not possible to create train of impulse. It is only a ideal method. For the practical condition we use a train of pulse instead of train of impulse. So the carrier signal, जो आपका carrier signal है, अब वो train of impulse नहीं होगा, वो होगा train of pulse. तो xpt which is equals to summation of n equals to minus infinite to infinite del t minus n ts by tau. Note, the Fourier transform of impulse train is another impulse train. Convolution with an impulse train is a shifting operation. ठीक है, लास्ट में हमने देख लिया है अभी ट्रेन ऑफ इम्पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगेन ट्रेन ऑफ इम्पल्स होता है. ठीक है, इसीलिए वो आपके कॉन्वोल्यूशन के थ्रू जो मैसेज फंक्शन है वो इम्पल्स पर शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, प्रॉपर्टी होती है इम्पल्स फंक्शन की. लास्ट हमने पढ़ा था एनालॉग कम्युनिकेशन में प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन. ठीक, नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रैक्टिकल सैम्पलिंग. प्रैक्टिकल सैम्पलिंग दो टाइप का होता है, नेचुरल सैम्पलिंग और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग. तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट natural sampling. If we multiply xt by the train of rectangular pulse xpt, we obtain a gated waveform that approximates the ideal sampled waveform known as natural sampling or gating. So the message signal is xt, carrier signal is train of pulse. ठीक है, यहाँ पर हम ट्रेन ऑफ पल्सेस ले रहे हैं, ट्रेन ऑफ गेट फंक्शन, ट्रेन ऑफ गेट फंक्शन ले रहे हैं. दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा डिस्क्रीट सिग्नल. ठीक है, डेल टी एस टी. तो x st equals to xt multiply with xpt. What is xpt? xpt is train of pulse, train of gate function, train of rectangular pulse. तो train of rectangular pulse को जब आप रिप्रेजेंट करोगे फोरियर सीरीज के थ्रू तो होगा summation of n equals to minus infinite to infinite c of n e to power j 2 pi n fst. What is cn? Fourier series coefficient, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट. ठीक है, अब द कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग आप एक्स एस एफ एस निकालोगे तो दोनों का कन्वोल्यूशन हो जाएगा. एक्स टी एक्स पी टी का कन्वोल्यूशन होगा, शिफ्टिंग यूज हो जाएगी, तो फाइनल आंसर आएगा सी एन एक्स ऑफ एफ माइनस एन एफ एस. दैट मीन्स ईच पल्स इन एक्स पी टी हैज विड्थ टी एस एंड एम्पलीट्यूड 1 by ts. The top of each pulse follows the variation of the signal being sampled. XSF is the replication of XF periodically every fs hertz. Cn is the Fourier series coefficient. The problem with the natural sampled waveform is that the top of the samples pulses are not flat. ठीक है, tops of the samples pulses are not flat. They are varying according to the message signal. It is not compatible with the digital system since the amplitude of each sample has infinite number of possible values. So the another technique is flat top sampling is used to solve this problem. ठीक है, ये आपका नेचुरल सैम्पलिंग. नेचुरल सैम्पलिंग में जो आपको सैंपल मिलेंगे उनके जो टॉप होंगे वो नेचुरली डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे, मल्टीपल नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स मिलेंगे. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल मेथड है वो है आपका फ्लैट टॉप सैम्पलिंग. तो नेक्स्ट इज फ्लैट टॉप सैम्पलिंग.
In the flat top sampling, the pulses held a constant height for the whole sample period. ठीक है, flat top sampling is obtained by the convolution of the signal obtained after ideal sampling with the unity amplitude rectangular pulse PT. ठीक है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में पहले आप मैसेज सिग्नल को इम्पल्स फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, फिर जो आंसर आएगा उसको आप ट्रेन ऑफ पल्स के साथ कन्वल्यूट कराओगे. ठीक है, पहले जो मैसेज सिग्नल है उसको ट्रेन ऑफ इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, फिर जो सिग्नल आएगा उसे ट्रेन ऑफ पल्स के साथ कन्वल्यूट कराओगे. दिस टेक्निक इज यूज्ड टू रियलाइज सैंपल एंड होल्ड सर्किट. सैंपल एंड होल्ड. व्हाई वी आर सेइंग दिस सैंपल एंड होल्ड? First we are doing sampling, then we are holding that amplitude. In SH, input is continuously sampled and then the value of held for as long as it takes for the A to D to acquire its value. This is a diagram of flat top. X dash T, PT, we are convoluting, we are getting answer XST. This is the diagram of ST. The amplitude is constant for the particular interval. Flat top sampling, the amplitude is now flat. X dash T equals to XT del T, where XT is nothing but X dash T. And what is X dash T? Is multiplying with XT and del TST. We are convoluting the multiplication of message and impulse with the train of pulse. So the final answer is PT convolution with output of the ideal sampling. By taking the Fourier transform, we will get the final answer where PF is the sinc function. PF equals to 1 by Ts summation of n equals to minus infinite to infinite x of f minus n fs. This is the frequency domain of flat top sampling. Flat top sampling becomes identical to ideal sampling as the width of the pulses become shorter. ठीक है, अगर आप ट्रेन ऑफ पल्स में की विड्थ को शॉर्ट कर दें तो हो जाएगा आपका ट्रेन ऑफ इम्पल्स एंड इट विल look like a ideal sampling. So the summary of sampling, there are three types of sampling: ideal sampling, natural sampling, and flat top sampling. The output of our ideal sampling is XST, which is multiplication of XT and X del T. Natural sampling output is XST is XT multiply with XPT. And flat top is X dash T convolution with PT. What is X dash T? X dash T is nothing but the output of ideal sampling. For all the sampling techniques, Fs must be greater than twice of B, where B is the bandwidth of the message signal. And if Fs is less than twice of B, the condition of aliasing will occur, which creates the problem. There are some practical sampling rates for the speech communication. The telephone quality speech has a bandwidth of 4 kHz. Most digital telephone systems are sampled at 8,000 samples per second. For the audio, the highest frequency of human ear can hear is approximately 15 kHz. And for the video, the human eye requires sample at a rate of at least 20 frames per second to achieve the smooth motion. In this lecture, we studied about the three types of sampling: flat top sampling, natural sampling, and ideal sampling. We concluded that the flat top sampling is better than all the sampling. Thank you for this video. For more details and your doubts, you can contact me at my number. You can write me mail also.